Hello gamers, welcome back to the new gameplay of Alan Wake 2। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एलन वेक शुरू किया था पिछले पार्ट में और आज हम उसके आगे खेलने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमें कोल्ड्रन लेक के पास एक बॉडी मिलती है जिसका दिल काट के निकाल लिया गया था। थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, बाद में हमें पता चला कि ये किसी एक ऐसे कल्ट का काम है जो वहाँ आने वाले लोगों को मार देता है। और ऐसे ही बॉडीज़ हमें पहले भी मिल चुकी हैं क्योंकि उसी एरिया में हमें फिर बाद में ये पता चला कि जो हमें बॉडी मिली है वो एक नाइटिंगेल नाम की एफबीआई ऑफिसर की है जो कि 10 साल पहले गायब हो चुका था और उसकी बॉडी में कुछ ऐसा छुपाया था जिसको कल्ट के लोग ढूंढ रहे थे। तो वो जानने के लिए हमने बॉडी को पास वाले ही एक टाउन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब हम जा रहे हैं उसकी रिपोर्ट लेने और ये पता करने कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या था जो वो निकालना चाह रहे थे कल्ट वाले लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम और वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले। I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these punches were... Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Welcome back, Anderson. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. So we have to interrogate some people who died in our Bright Falls। हमें कुछ लोगों को इंटरोगेट करना है जो कि विटनेस हैं। ये है जैसे Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. शायद ये भी एक कल्ट के लग रहे हैं। झूठ बोल रही है, ये साफ समझ आ रहा है। So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something.
Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psycho मेरी with सस्पेक्ट लिस्ट deer में तो ये जा masks. रहे हैं पक्का। They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. झूठ बोला, झूठ झूठ, सच बोल सच बोल। What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. I mean, they were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's क्यों all. रोका? क्या बता रहा था वो, बताने क्यों नहीं दिया? प्रोफाइलिंग करना पड़ेगी। The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. तो टैमी को एक नेकलेस मिला है जो कल्ट वाले लोग हैं उनमें से किसी एक का है। The bookers were at Cauldron Lake. बुकर्स को क्या मिला देखते हैं। This was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. अच्छा, तो ये किसी बुक के लिए अंदर घुसे थे और जैसे ही ये लोग गए उधर उनने देखा कि कुछ लोग उसको मार रहे हैं। सो दैट्स द केस। चलो देखते हैं इधर, हमें कुछ मिला था ना एफ। ये नया क्लू है, इधर लगेगा क्या? Think. यहाँ लगेगा ये। We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. तो ये पूरा एक ग्रुप है किलर्स का, एक अकेला सीरियल किलर नहीं है कोई जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो एफ केसेस में क्या बोल रहा है? इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है? बैकग्राउंड केसेस अक्यूमुलेट क्लूज। ओके, द कल्ट ऑफ द ट्री। I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. तो हमारा नया काम है अब कल्ट ऑफ द ट्री लोग को ढूंढना कि ये आखिर है क्या कल्ट ऑफ द ट्री। तो इसमें हमें 2 फोटोज़ मिले हैं। साइकोलॉजी क्या है? दे आर हाइडिंग, दे अपना फेस हाइड कर रहे हैं और कनेक्शन टू डियर फेस्ट। ये कहाँ लगेगा? इधर यहाँ लगेगा क्या? कल्ट गोल। कल्ट सिंबल मिला है और हमें अभी 2 चीज़ें मिली हैं और गोल क्या है इनका ये पता करना है अभी हमें। साइकोलॉजी क्या है, क्या सोच है उसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व है, ये सब अब हमें पता करना है। तो हम चलेंगे अभी। So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. लाओ दो, क्या मिला था? एविडेंस छुपा रहे। Told you not to keep that thing to me. पता है ना इसके चक्कर में अरेस्ट हो सकते हो। Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. फ्रेंड है इसकी।
I thought पुरानी we'd लग रही never see बहुत। you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How सागा are की you? स्टोरी अभी हमें कुछ भी नहीं पता, I'm अभी सब sorry. पता चलने वाला Who है are बस you? थोड़ी देर में। I don't know what you're जैसे talking जैसे about. स्टोरी बढ़ेगी हमें सब It's पता me, चलता जाएगा। silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. इसको कुछ भी याद नहीं है यार। If you say so. भाई ये है कौन फिर? दोस्त तो नहीं लग रही। क्या ये सब इसके पास साथ पहले भी हो चुका है? ऐसा लग रहा इसको सब याद है और इसको याद नहीं है। कल्ट की फोटो लगाते हैं केस बोर्ड में। कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी। हाँ, कल्ट सिंबल मिल गया। नेक्स्ट All मिशन। set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. हाँ, अब Look, I see. नाइटिंगेल I got a रेडी है। lead. हमें देखना Looks है like कि we're क्या dealing with a क्या cult. लगा था उसके अंदर, The cult of the तो उसको tree. देखने जा रहे हैं अब। Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. वो Wizard बोल was रहा है my कि favorite. हमें ये ना पता चल लास्ट में कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. बाद में चैट करेंगे, अभी पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना है। चलो। Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But उसको पहले से पता लग जाता क्या कि क्या होने वाला है किसके साथ, या हमें मोर्ग जाके और बॉडी एग्जामिन करनी है नाइटिंगेल की। तो अब ये हम वहीं जा रहे I'd हैं। like ये to क्या take a है? closer look as soon as possible. मैप। Lead the way, Sheriff. शेरिफ। the Bright Falls Sheriff Station. Anything you चलो, need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. कोई ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। अभी हमें बॉडी चेक करना है कि उसके अंदर ऐसा क्या था। So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. तो उसने बोला कि ये मोर हैंडल कर पाओगे आप लोग, तो Something उसने about बोला कि more. मैं हूँ They क्वालिफाइड always हूँ। cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. तो बॉडी कहाँ है? Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the फिर internal से एग्जामिन examination. करनी है हमें बॉडी। हाँ, यहाँ क्या है? What was the cause of death? What Cause other of clues can the body death. give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. बॉडी पे ऐसे साइन है जैसे इसको डुबाया गया था। This looks like text. कुछ लिखा हुआ है Nightingale या didn't टैटू strike me है। as a tattoo guy. सो वो बोल रहा है कि नाइटिंगेल टैटू गाय तो नहीं था, तो कुछ तो है। They did leave something inside his chest. उसके चेस्ट में भी कुछ है। हार्ट में There's क्या writing है? on here. हार्ट पे भी कुछ लिखा Can't make हुआ it है। out. Writing. How'd they manage that? Defensive wounds. He put up a fight. अब हमें केस बनाना है। चलो क्लू लगाते हैं।
तो अभी हमें क्या क्या पता है? Time to see what Nightingale's body can tell us. सो नाइटिंगेल की बॉडी हमें क्या क्या बता सकती है? देखो, पहले डिफेंसिव वुंड से मतलब उसने फाइट तो किया है, मतलब ठीक है। कुछ चेस्ट में ने छोड़ा हुआ है, वो देखना है। हार्ट पे कुछ राइटिंग है, कुछ लिखा है, ये इधर नहीं लग रहा। रिचुअल राइटिंग हार्ट पे है और उस पे है हाथ पे। Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Strange tattoos on skin. चलो और इन्वेस्टिगेट करते हैं, अंदर क्या छोड़ा है उनने वो देखना है अभी। कुछ तो है, कुछ ना कुछ जरूर। ये क्या है? कोई किताब या लिफाफा या कुछ लिख के रखा है उसमें। It's the same type of page we found at Cauldron Lake. पेज ही है जो जैसा हमें एक कोल्ड्रन लेक के पास मिला। Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. तो ऐसे पेजेस इन लोगों को भी मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में, सिर्फ हमें नहीं। और उनमें कुछ स्टोरीज लिखी हुई है इन्हीं लोग के बारे में। तो जिसने भी लिखी है वो पहले से जानता है कि क्या क्या होने वाला है। वो लिख रहा था, वो एलन वेक ही लग रहा था। No, wait. ये क्या हुआ? Sheriff? What the hell? कहाँ गायब हुआ? ये कैसे हो गया? ओह शिट, जिंदा कैसे हो गया ये? चल क्या रहा है ये, कुछ पता नहीं चल रहा। जिंदा कैसे हुआ और वो शेरिफ कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यार, कुछ तो ब्लैक मैजिक टाइप। Could not see into bright light. जिंदा कैसे हो गया ये, सबसे बड़ी बात। He's coming. No weapon. The page said to get into the light. पेज में लिखा था कि लाइट I में need to जाओ। get into the light. Now. आवाज कहाँ से आ रही है? कहाँ से आएगा ये? लेफ्ट राइट में तो कुछ है नहीं, सामने से। He can't see me in the light. लाइट में इसको दिख नहीं रहा है, अगर अंधेरे में हम जाएंगे तो हमें My दिखेगा gun's ये। out in the hall. Gotta get it back. गन हॉल में पड़ी है, हमें जाके लेना है। कैसे जाए पर? Some of you if you leave or attack from safe haven it will be fun. Go. गन मिल गई। Vanished. गायब हो गया? कहाँ गया? हो क्या रहा है?
भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do तो उन anything पेजों about ने it. पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था Somehow we क्या need to होने make वाला sense है। of this. तो उसको कैसे Saga was पता क्या back at होने Cumber वाला है Lake. जिसने भी वो पेजेस लिखे थे। Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. ये हमारे ही बारे में, सागा के बारे में लिखा है, मतलब कि गोल्डन लेक पे जाएगी और नाइटिंगेल उसको मिलेगा, क्रीचर्स ऑफ डार्कनेस मिलेंगे। तो केस बोर्ड पे चलते हैं अभी। एक फोटो मिली लाइट। A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। कुछ पेजेस हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा। राइटिंग पार्ट ऑफ रिचुअल, कल्ट गोल। Think. यहाँ नहीं लगेगा, ये कहाँ, यहाँ उस इन्वॉल्व में भी नहीं जाएगा। नाइटिंगेल ओनली विक्टिम टू बिकम अ मॉन्स्टर। ये अकेला ही विक्टिम ऐसा क्यों है जो मॉन्स्टर बना? और जो पहले हमें विक्टिम्स मिले थे वो मॉन्स्टर नहीं बने थे, सिर्फ ये बना। अभी हमें मैन्युस्क्रिप्ट पेज पढ़ना है। सागा फाइट नाइटिंगेल विथ लाइट, एफ रीड। The victim was one of their own, FBI agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up only to be murdered in a brutal and bloody ritual. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, pushed past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but you both know that's हेल्यूसिनेशन not तो नहीं bullshit. था। वो शेरिफ This was कहाँ गायब हो गया? वो supernatural. शेरिफ Well, I'm अभी glad भी you नहीं know आया what है to वापस। say. Now we can figure out a way forward. What happened? Right before हाँ, things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious.
Like he dreaded what was coming. One more mystery. The शेरिफ victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. तो इसको लग रहा है कि वो कल्ट कुछ ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं जिससे मॉन्स्टर बन रहे हैं मरने के बाद, और वो शेरिफ भी हमसे कुछ छुपा रहा था, पूरा पूरा सच नहीं बता रहा था, इसलिए वो गायब हो गया। The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. तो अभी हमारा गोल क्या है? फिगर आउट पता करना है कि नाइटिंगेल गया कहाँ। चलो जा क्यों नहीं रहा? It won't open. ये तो नहीं खुल रहा है, यहाँ लॉक है। ये पेज का कुछ हाईलाइट दिखा रहा है। क्या हाईलाइट दिखा रहा है ये? समझ नहीं आ रहा। फिगर आउट, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। इस तरफ कहीं गया था ना? नहीं, यहाँ से तो भगा था वो। मोर्ग है, ये क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। Can't be opened on this side. यहाँ से ही जाना है कहीं से तो भी। I can't get through this. और ये लॉक्ड है। Something is missing. अच्छा हाँ, ये लगेंगे इधर। What these pages aren't making sense. According to the page, it sounds like Nightingale went back to Cauldron Lake and he is taken. The overlap, what these pages are making sense. तो इस पेज के हिसाब से वो वापस कोल्ड्रन लेक गया है। The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. तो इससे पहले कोई और हर्ट हो, हमें उनको देखना पड़ेगा जाके कहाँ है। We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down.
You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. But we'll do what we can, man. And try to tell us all, हमें सब बता हुआ क्या है. Nightingale's bird was missing. How could he do anything? He's dead. That's crazy. चाबी कहाँ है इधर की? चाबी दो. Monsters aren't वहीं real है. and what do you mean the आओ, sheriff disappeared? क्रॉम्पटन. Huh? He's gone like magic? Magic's not real. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright तो Falls हमने case, बैकअप मंगा लिया है whenever you क्योंकि can spare. नाइटिंगेल और वो लोग हैं डेंजरस है, जो भी कल्ट है, तो हो Think सकता we're वो एक actually साथ fine सारे waiting अटैक here? कर दे. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. तो अभी जो भी है पेजेस ही हैं, हमें पेजेस के हिसाब से चलना है. उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो भी लिख रहा है सही लिख रहा है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई उपाय नहीं है उसको पहुंचने का. जल्दी आओ शेरिफ. कार कैन बी यूज्ड टू ट्रेवल बिटवीन लोकेशन. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. सो कार कैन बी यूज्ड, तो हाँ, कोल्डरन लेक. तो अभी हम जा रहे हैं वापस कोल्डरन लेक जहाँ हमें बॉडी मिली थी. Clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder तो case एलन Casey. वेक एक राइटर था और ये जो नाइटिंगेल था उसको ढूंढ रहा था, वो उसको पकड़ने के लिए ढूंढ रहा था कुछ तो भी. Annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? तो कुछ कल्ट थे जो उसकी बुक के पेजों को लेके वैसे ही लोगों को मारने लगे थे जैसा उस पे सेम लिखा था. उनको लग रहा था ऐसा करने पे वो वापस आ जाएगा एलन वेक और उससे उनको फ़ायदा होगा क्योंकि वो पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है. This is a messed up thing. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. तो पेज में लिखा था कि वो कहीं ओवरलैप पे है नाइटिंगेल. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case.
तो ओवरलैप कहाँ है ये देखना पड़ेगा। I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. So, Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? ये अंदर कैसे आए? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. तो एक ये How's it एफपीसी going? में काम करता है और ये वुड्स देखने आया था। तो ये किसी तरीके का मैकेनिक है। What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Cannot तो run through a ये garbage बोल रहा है can. कि इस मशीन की वायरिंग हर कुछ महीनों में ख़राब होती रहती है, तो मैं इसलिए सिर्फ यहाँ रिपेयर करने आया हूँ और कुछ नहीं, और मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसको लगता है कि ये रैकून का काम है, लेकिन How did you रैकून hear का तो about नहीं the लग murder, रहा। Elmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna de vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Blah 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 blah. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Thank you. काम करो अपना, हमें वो नाइटिंगेल को ढूंढना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोगों को सब पता है, बस झूठ बोल रहे हैं। But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. शेरिफ हमें ट्राई कर रहा था और पेजेस देने के लिए, इसलिए उससे पहले वो हमें दे पाता, वो गायब ही हो गया। पर क्यों? ऐसा क्या था उन पेजेस में? Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. तो अब हमें जाना कैसे है, वो हमें कुछ मिलेगा यहाँ। Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. पैरों के You come निशान through हैं the यहाँ। crime scene one more time, KC. Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. पैरों के निशान बने हैं, इनको हम पीछा करके उस तक पहुँच सकते हैं।
तो ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। कहाँ चले गए? ये जा रहा है, ये जा रहा है। कुछ सही नहीं लग रहा अंधेरे में जाना मुझे। तो आज का गेम प्ले हम यहीं रोकते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो अब देखते हैं उधर लेक के पास हमें वापस से नाइटिंगेल मिलता है या नहीं, या फिर जो जो पेजेस हमें मिले हैं वो लिखे किसने थे, वो कैसे हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, वो कैसे पहले से उसको लिख सकता है, और वो है कौन, और ये कल्ट के लोग कौन हैं, उनका भी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा तो हमें पता चलेगा कि किस मोटिव से उनने मारा था। तो ये सब जानेंगे हम आगे। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।